कोई नहीं करता, तो उसको इमेजिन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. Yeah. So I mean more of a practical kind of example, and then contrast with an example where the you know order does not matter. इसमें तो मतलब order does not matter ना. अरेंजमेंट्स, यो तो एक तरह से टाइम टेबल कह सकते हैं स्कूल का जो बनता है. ये कौन है? इसको बोलते हैं स्टूडेंट को प्रोजेक्टाइल का मास्टर बनाना. अच्छा जी. हाँ जी. सो यू आर गिविंग एन एग्जांपल टू मी. सर टाइम टेबल स्कूल का, ओके, मतलब एक्सप्लेन ना. जैसे एक्सप्लेन जैसे भी तो लाइक कर भाई. जैसे लाइक 6 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, उनको लाइक ठीक है. डिफरेंटली अरेंज करना हर एक दिन के लिए इन 5 days, अरेंज करना. in making 5 possible arrangements. ओके. ओके, सो लेट मी ट्राई एंड डू इट. ओके, यू टेल मी वेदर यू अंडरस्टूड और नॉट. ठीक है. मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि देर आर 6 players जो they appear for a race. Okay, so the race is among A, B, C, D, E, F, and that's your end point. Okay, this is your end point. Now, does it matter to the world whether A has reached first, then C, then D, F, G, sorry, A, B, B, and E? And the second way the race finishes is C, A, D, B, F, and E. So, 2 बार रेस करी मैंने. So does it matter to the world how the race is finished? It does, right? रैंक बदल जाती है बंदे की. अरेंजमेंट मैटर्स. कैसे आ रहे हैं. So this is कौन a फर्स्ट situation आएगा, of permutation, right? Straight away. पाँच Because सौ to the बीस world, ways है. हाँ, exactly. तो वो मतलब इसमें ऑर्डर मैटर्स. सो ये एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल है वेयर द ऑर्डर मैटर्स. सीधा सीधा नजर आ रहा है. द ऑर्डर इज चेंज्ड, सिचुएशन विल चेंज. नाउ गिव मी एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन एंड टेल मी व्हाई in that scenario order is unimportant. देखो मैं बार बार इसको क्यों स्ट्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग है, as you rightly said, this is slightly tricky type of topic, right? So that हाँ, mindset has to be bit mature. Not that it is impossible. थोड़ी सी discussion oriented हो जाएगा तो it will be very nice for you. like okay. When this comes in your mind, that you can practically explain a situation and this is called this is this. So you really have been bit of master. सर एक कंपनी में लाइक 20 मेंबर्स काम करते हैं, Okay. एंड वी हैव टू मेक अ कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स. नो सर, डायरेक्टर्स नहीं, सॉरी, क्या कहते हैं, एक उसे एक प्रेसिडेंट बनाना है और ठीक है. वाइस प्रेसिडेंट बनाने हैं कमेटी के अंदर. ठीक है. कमेटी should consist of 5 members, Okay. 3 vice presidents and 2 presidents. ठीक है. So you're doing a committee selection. Okay. And oh, Okay. Then what happens? so we can select the members in Hmm. 20C3. Okay. That is a formula, right? Which is fine. But why order does not matter?
ऑर्डरिंग में क्या मतलब, अरेंजमेंट का ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता. दैट पॉइंट हैज टू बी एक्सप्लेन्ड. बिकॉज एक तरह से हम सिलेक्ट कर रहे हैं, हम ऑर्डर को देख ही नहीं रहे. किस ऑर्डर को नहीं देख रहे आप? दैट्स माई क्वेश्चन टू यू. विच ऑर्डर आर यू नॉट स्ट्रेसिंग ऑन? अग्रीड कि आप ऑर्डर को नहीं देख रहे, बट विच ऑर्डर ऑफ व्हाट? दैट पॉइंट यू हैव टू स्ट्रेस ऑन इफ यू आर एक्सप्लेनिंग इट टू मी. ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन. ओके, तो यू सेइंग कि पहले पहले वाइस प्रेसिडेंट सिलेक्ट हुआ या पहले वो सिलेक्ट हुआ? किसी भी वे में लाइक सेलेक्ट कर सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट. ओके, गॉट इट. दिस इज स्लाइटली इजी टू अंडरस्टैंड as an example. All right. So in a real life, if you have to arrange flags to create a signal for a train, does the order matter? ट्रेन के लिए सिग्नल बनाने हैं तो ट्रेन के ऑर्डर मैटर ड्राइवर करता के है. पास मैटर करता है ना. इट मैटर्स. ये यू तो कांट फिर से वो हो कि गया ना, या परम्यूटेशन. या एग्जैक्टली. इट विल मैटर अ लॉट इन फैक्ट. ऑल राइट. ठीक है. So this is a distinct point, if you can, get in your head, is सोचने का जो मेथड है. हाउ डू यू ओके. Okay, so in your example, you have, for example, how many students in your class? 26. 26. Okay. So you have to choose a class leader, a class organizer, and a class treasurer, because you want to create a class committee. एक ऑर्गेनाइजर है, एक क्या लीडर है, बोला एक सर? ट्रेजरर है. क्लास ट्रेजरर. हाँ, मतलब पैसे का जो हिसाब किताब रखेगा. क्लास को कौन से पैसे चाहिए? तो ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू आर ऑर्गेनाइजिंग अ पिकनिक एंड यू आर डूइंग अ फंड रेजिंग उस प्रोग्राम. So if you have to create a class committee, what are you focusing on? on selecting people from a group of 26. Yes. Then how many ways Where can you select? A class leader, a class organizer, and a 26 class. C3. हाँ, क्या आंसर आएगा? 26 factorial upon 23 factorial into 3 factorial. Okay. ठीक है. So you think it's a case of there is no ordered selection in this, right? Like there is no order to it. हाँ जी. Okay. And if I said it is going to be an ordered selection, then order is important. Then how will you change this? How will you change this answer if I say this is 26 C3 into 3 factorial. divided by 23 factorial, right? 26p3. 26 P3. Because now ordered sequence है ना, its order is important. अच्छा. Okay, so I'm just want to see whether you're very clear on this topic or not. That's the emphasis today, nothing else. कितनी clarity है? Okay. What is the relationship between NPR and NCR if you have to write an equation? अच्छा. As an equation, if you have to write.
वैसे NCR हम्म is equals to 1 by 1 upon R factorial times of NPR. हम्म राइट, ठीक है। आर फैक्टोरियल का डिफरेंस ही तो होता है दोनों के बीच में। एनपीआर इज इक्वल टू एनसीआर, ये इंटू आर फैक्टोरियल करना है या इसको आर फैक्टोरियल करना है? नहीं, NCR नहीं, तो क्या कहते हैं, NPR को R factorial करना है। यहाँ पे हाँ, नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट। आई एम जस्ट गोइंग विद यू, नथिंग एल्स। जी, यहाँ पर करना है। हाफ है, NPR is equal to R factorial times NCR. ओके, my suggestion is please do some practice on your own. Otherwise you will, it'll go out of your mind, भूल जाओगे। Okay, so let me pick up some questions from इसकी assignment. Do please ensure that you do the assignment. You'll end up in trouble in this chapter थोड़ा सा। ठीक है। Not that it is hard or something else, but अपना भी एक पॉइंट ऑफ व्यू बन जाता है थोड़े टाइम में ना, देखते ही कि I have it in my head that what type of, with restriction, without restriction, and all those words. You're good at the card problems. That's your strength. Okay, what is the multiplication principle of permutation and combination as part of the counting? Counting में you have two principles, right? One is addition, the other is multiplication. तो multiplication product principle क्या है? मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। What is it? What does it say? क्या बोलता है वो? अगर हमें एक Can you give an एग्जाम, example also? हाँ जी, If you can give an इट्स example also and explain it. they are 6 digits, 1 to 6, ठीक है, and we have to make a 3 digit number out of it. ठीक है, तो लाइक हम उसको, और रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, ठीक है। तो हम उसको अरेंज कर सकते हैं। वी कैन मेक 6 into 5 into 4 हम्म, numbers.
right? One 20 numbers. 120 numbers. Okay. So this set will contain 120 numbers. It gives you a set, right, of a finite quantity. 120 elements हैं इसके अंदर. That is what you've done. तो multiply किस किस को करा? 6 into 5 into 4. So one set you have is of 6. The second set is of 5. And the third set is of 3 numbers. So if you have individual sets, which are S1, S2, S3, then to get that set of क्या बनाया? What have you made from the? So you have to create a set of 3-digit numbers out of using choosing 1 to 6 from 1 to 6. from 1 to 6. And so the number of sets you have is, what are the sets you have available to create these 3 digits? 120 That is, base. लेकिन वो इंडिविजुअल सेट्स कौन कौन से हैं? एक ही सेट है बस. वो तो आंसर है ना. मल्टीप्लिकेशन में जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ईच सेट होती है. ईच सेट होता है ना वो तो. Not clear. Okay. Tell me what is the subtraction principle? वो नहीं पता होगा. Okay. What is addition principle? एग्जांपल के साथ. So you can do the question, but I think you should also have good clarity on being able to थोड़ा अगर सा कोई भी इवेंट occur in some m ways, right, and another event क्या कहते हैं, d can occur in n ways, but if they cannot occur together, एक साथ में नहीं हो सकते, तो then d or f can occur in m plus n ways. Okay. ठीक है. Let me give you a real life example. So this is a real life example. So you are going for a सर जैसे exam. लाइक हम एक जगह कॉइन टॉस कर रहे हैं और एक जगह डाइस टॉस कर रहे हैं. Yeah. Exclusive events. हाँ जी. Independent. So I go for an exam that has 40 questions. Okay. The total time which is allocated to do all of this is 90 minutes. When I give this 40 question exam, okay, the number of ways I can do this is a combination or a permutation. Permutation. Explain. तो लाइक 40 क्वेश्चंस करने ना, और किसी भी वे में कर सकते हैं. ऑर्डर मैटर करता है. नहीं करता ना एग्जाम में, तो क्या फर्क पड़ता है? इट्स जस्ट एन एग्जाम. वही 40 क्वेश्चन दूसरा बंदा अलग तरीके से कर ले तो ऑर्डर मैटर करेगा? आई डोंट थिंक सो ऑर्डर विल मैटर इन दिस मतलब केस. वो क्या कहते हैं, अरेंज ही तो करेंगे. 40 क्वेश्चन कैसे भी कर सकते हैं किसी भी ऑर्डर में. बट ही कैन चूज एनीवन ना. आपने एग्जाम बनाना है, आपने क्रिएट करा है एग्जाम, राइट? यू क्रिएट एन एग्जाम एंड यू चूज अ सेट ऑफ प्रॉब्लम्स टू. जैसे मैंने एग्जाम बनाया और मैंने उसमें 40 क्वेश्चन चुन लिए, तो एग्जाम बनाते हुए ये मैटर करेगा कि मैंने उनको 1 to 40 करा या इनको मैंने अलग ऑर्डर में अरेंज कर दिया? और 40 फैक्टोरियल बेस में 40 फैक्टोरियल. हाँ, बट इज इट अ कॉम्बिनेशन व्हेन आई क्रिएट एन एग्जाम नहीं, मेरा ऑफ 40 क्वेश्चंस? परम्यूटेशन है. हाउ इज इट परम्यूटेशन यार? इफ आई पुट क्वेश्चन नंबर, सिलेक्ट तो कर ही नहीं रहे ना एक चीज. नहीं क्यों नहीं कर रहे? if I make an exam and there are 40 questions in it, whether I put the question number 40th as first question
or a 40th question, how does it matter to the exam को क्या फर्क पड़ता है इससे? If you do, whether you do first or 40th, how does it change the exam, impact the exam? It does not. Okay. Okay, now what I do is I have for example, I'm just you have to think in terms of how does it matter to be able to distinguish. So you have, for example, there are you have sports items with you. Okay, so you have a item number 1, hockey. Then you have a table tennis racket. Then you have a tennis racket. So these are all distinct items. Okay, and ये word जो है definition में था, if you remember, जब हम कल fill in the blanks कर रहे थे. So you have distinct objects available to you. What you have to do is you have to pick, you have 10 items all distinct. You have to pick 3 out of them and arrange them nicely 10 into 9 on into your 8. Is it a permutation or a combination is my question. Permutation. Exactly. How did you decide it? That's my question to you. Because we have to arrange them. Correct. Matters कैसे रख रहा हूं मैं? अगर अरेंज मैटर नहीं करते तो हम तब कॉम्बिनेशन करते हैं. Right. Okay. Yes. Okay. Now let's say you have some sports event that is happening, and you have 20 athletes competing. Okay, so you have 20 athletes competing for the 3 medals. Obviously, gold, silver, and bronze. They are fighting for this. Okay, now the question is, how many? So how many permutations are possible of this gold medal being won by the athletes? गोल्ड मेडल. एक गोल्ड जीतेगा, एक सिल्वर जीतेगा और एक ब्रॉन्ज जीतेगा, राइट? 20 into 19 into 18. Yes. Explain me in permutation language. like वो अरेंजमेंट्स बनानी है ना पॉसिबल. So if you say basically जो हमारा product rule है theorem में, product rule multiplication which you were trying to explain me, you have applied the product rule, right? The possibility that how many people can win the gold medal is 10. How many people can win silver is 9, and how many can win bronze is 8. So these are sets, right? Set of 10 people, set of 9 people, and then set of 8 people. If you multiply individual set number, you get the permutations of 20 athletes. Right? Okay. ठीक है तो Okay. Now I'm just thinking if you can distinguish is when I feel confident that you can do this. Assignment करना है इसकी भाई, थोड़ा सा articulation जब तक ठीक से आ जाएगी तब you will be confident कि yes, I have got the point. Okay. Now you have again got 20 athletes, and they are competing for not for medal. Okay. Now they are competing for
फॉर्मेशन ऑफ अ कमिटी. ओके, तो इन एथलीट्स को बुलाया जाता है और इनको बोलता है कमेटी बना लो, और तीन तीन बंदों की कमेटी बनानी है, 20 एथलीट है, और तुम्हारा काम होगा कि जो जितना जो वट एवर कॉम्पिटिशन हैपन्स इन द फ्यूचर, योर जॉब इज टू मेक द पॉलिसी फॉर द कंपटीशन. कैसे कंपटीशन ऑर्गेनाइज करेंगे, क्या रूल्स एंड ट्वेंटी रेगुलेशंस सी होंगे, थ्री हाउ, व्हाई. बिकॉज द ऑर्डर डजेंट Articulate, don't मैटर. tell me answer, tell me the articulation of why. हमें लाइक 20 बंदों में से 3 लोग सिलेक्ट करने हैं. ठीक है. लाइक हमें ये नहीं स्पेसिफिक है कि किस ऑर्डर में हमें सिलेक्ट करना है. लाइक हमें ऑर्डर स्पेसिफाइड नहीं है, तो उनको सो यू सेइंग कि कमेटी जब तो मेडल हमें जीतते हैं, व्हेन वी हमें विन द बेसिकली मेडल, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ढूंढनी है. ये तो लाइक यार तुमने देयर डिसाइड कर लिया ना, इट्स कॉम्बिनेशन. एक्सप्लेन मी इन टर्म्स ऑफ कॉम्बिनेशन लैंग्वेज. कॉम्बिनेशन के अंदर हम मतलब देखो, अगर मेडल ऑर्डर मैटर जीतोगे, नहीं करता सिलेक्शन का. हाँ, तो मैं बोलता हूं कि गोल्ड मेडल वाज वन बाय रोहित, क्षितिश एंड गर्वित, 3 people. ठीक है. गोल्ड मेडल by me, silver medal by Shitish, and Garvit won the bronze medal. Right? Now, this choice matters a lot in winning a gold medal. बहुत फर्क पड़ता है इससे, राइट? तो क्योंकि सिचुएशन बदल जाएगी इमीडिएटली. बट सिलेक्शन ऑफ कमेटी में, if you have 3 people being selected, the additional way they can be permuted is how many? 3 factorial, right? पहले आपने 20 में से 3 लोगों को अरेंज करा, 20p3 in the previous question. That is what you did. 20p3, 20 into 19 into 18, saying it really matters कौन मेडल जीतता है, क्योंकि फर्क है लोगों के बीच में. सेकेंड केस में व्हाट यू आर सेइंग इज, मतलब कोई भी 3 आ जाए, कोई स्पेशल बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई गोल्ड और सिल्वर वाली बात ही नहीं है इधर, कोई भी आ जाओ. तो आपने बोला ठीक है, मैंने इनको परम्यूट करा था 20 into 19 into 18, लेकिन तब मेरे लिए ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट था. अब मैं ऑर्डर को निकाल के आई विल डिवाइड दिस नंबर ऑफ 20 into 19 into 18 with 3 factorial ऑल्सो, क्योंकि अब मेरे को इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो जो लोग मैंने 3 चुने हैं उनका आपस में जो एक ऑर्डरिंग थी वो 3 फैक्टोरियल थी. दैट डजंट मैटर टू मी नाउ. सो आई एम गोइंग टू डिवाइड माय परम्यूटेशन विद 3 फैक्टोरियल. So you get, say, okay, 20 factorial, which is 20 into 19 into 18, divided by 3 factorial. Because now the choice of 3 people doesn't matter to me, because there is nothing special about them. But till the time it was about gold medal and it was about silver medal and a bronze medal, these were very important. It was very important who is winning. उससे फर्क पड़ता है मुझे. ठीक है. ठीक है. तो मतलब ये कि फर्क पड़ता है नहीं पड़ता, इन द अरेंजमेंट. तो मैंने भी तो और वही बोला था कि सिलेक्शन का ऑर्डर मैटर नहीं करता. एक्सप्लेन एंड सिलेक्शन इज क्लियर कट कॉम्बिनेशन. हाँ ठीक है, बट आई एम सेइंग एज अ ले मैन, हाउ डू यू कम्युनिकेट दिस एनीवन? ओके, थोड़ा सिंपलर वे में भी. Once you are confident there, you will be able to crack these questions. I'm doing repeated definition and fill in the blanks and all of that only for this purpose, कि थोड़ा वो जो समझाने वाला काम है, थोड़ा सा it becomes simpler for you when you see the question. Don't get carried away by the very long language and all that. Really doesn't matter. So today we are closing this chapter, okay? Broadly, we are saying that we have completed. Now you have to do, to be able to grasp it successfully, please ensure that you have done the question. इस चैप्टर के तो जरूर करने चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा हमारे स्कूल के टीचर ने, दे हैव गिवन
क्या वो दिया था? कौन सा क्वेश्चन दिया था? एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन, सीधा बेगर्स थ्योरम, और कुछ नहीं पूछा, बेगर्स थ्योरम पूछ ली। इट इज कॉम्प्लेक्स। ये बिल्कुल वैसा है केमिस्ट्री के थर्ड चैप्टर की तरह। यस। आएगा तो इस पे अच्छा क्वेश्चन आता है, जब भी आता है। बस वेरी। Okay, so let me give you some practice questions which you can try now, and then we will call it a हो गया। उसके बाद you are getting the assignment. क्योंकि इसमें ना, if you do probability as a chapter, then you will need to be good in this chapter. हाँ, You already know this. वो एक्चुअली ये उसमें हेल्प करेगा तेरे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालने हाँ, में। आउटकम्स में तो वो फिर इट शुड नॉट हैपन दैट ये तो हमने अनहर्ड है बड़ा। ओके, सो दैट विल बिकम अ। इवन तो सर एक सेट थ्योरी भी यूज होने वाली है। जी। So one question is, you have say 10 points. Okay, so you are given 10 points, okay, in a plane, XY plane हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और इनमें से there are 3 which are collinear. 3 are collinear. What you have to find is number of straight lines. बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। Hmm. थ्री विच आर कोलिनियर, कोलिनियर मतलब तो जो ट्राइंगुलर वे में नहीं No, होते। no, they are in the same. So, for example, you have 10 points, right? One, टू, थ्री, तीन तो कोलिनियर है, तो ये तो हाँ, कोलिनियर बन ही गए। बाकी एक लाइन में नहीं है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक कितने बन गए? तीन और तीन, छः तो स्ट्रेट लाइन जो होती है वो दो लोगों दो पॉइंट से बननी चाहिए। बनती है। तो यस, तो इसमें तीन कोलिनियर दे रखे हैं, एक लाइन तो ऑलरेडी है आपके पास, तो वन तो लास्ट में, यू नो, ऑलरेडी नो यू हैव अ लाइन। वन लाइन तो पक्की है ना आंसर। हाँ, तो तीन तो टेन कोलिनियर सीट पॉइंट्स हैं। 10। अच्छा, थ्री एक, आर दो, कोलिनियर। तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, कितने बन गई हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। ठीक है, सो 10 पॉइंट बन गए, और आपको डिसाइड करना है हाउ मेनी स्ट्रेट लाइंस आर पॉसिबल यूजिंग दीज पॉइंट्स, ऑल द पॉइंट्स। बट द हिंट इज व्हाट यू जस्ट सेड, you need 2 points to make a line. करेक्ट है। 10p2। पी नहीं, अरेंजमेंट पी से नहीं, क्या फर्क पड़ता है यार? इधर, अरेंजमेंट से। या इधर से लाइन बने या इधर से लाइन बट बने, थ्री आर लाइन इज गोइंग। कोलिनियर, उनका क्या करना है? 3 are collinear, yes, that is correct. So I will just redraw this here so that it actually looks collinear.
तो 10C2. Okay, let's say 10C2. So if you have 10 and you select any two, this is the number of lines you can draw. Okay, and plus there is a line which is made by 3 points also, right? So one more line. So 10C2 plus one more line which is given to you, which is made by 3. ठीक है? और do you see that these 3 points, एक लाइन ये है, एक लाइन ये और एक लाइन ये भी है. तो ये 3 जो पॉइंट्स हैं, ये भी अपने अंदर कितनी लाइनें डाल के रखी है इन्होंने? 3C2 तो प्लस. वो 10C2 में इंक्लूडेड है ना अच्छा अच्छा, ओके ऑलरेडी. ओके, ठीक है. इट्स ऑलरेडी इंक्लूडेड. 3 लाइनें और भी दिख रही हैं एक्स्ट्रा. दिस इज योर आंसर. ठीक. These are the number of straight lines you could probably make. So let's talk about another situation. Say how many triangles can you make using these? ट्रायंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट्स चाहिए. ठीक है. So you mean 10C3? हम्म, Any 3, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, वो लिया था वो लिया था. ट्राइंगल तो ट्राइंगल है ना, ऐसा कोई भी 3 ले लो, उनका ऑर्डर इज अनइम्पॉर्टेंट, सेम ट्राइंगल आता है. माइनस वो कोलिनियर वाली लाइन. हाँ जी. तो कोलिनियर कितने हैं आपस में? 3, राइट? -3C2. ट्राइंगल के लिए 3 चाहिए होते हैं ना. या C3, सॉरी. So subtract it. ठीक है. So okay. All right. और क्या ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है? ये ज्योमेट्री बेस्ड है. दिस इज अ ज्योमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम. ऐसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन एक आध दिया हुआ है वेयर you do they do ask you how do you decide this. ऐसे बिल्कुल वर्टेक्स ऐसे कुछ लैंग्वेज दी हुई है. ओके. और क्या ट्रिकी क्वेश्चन बन सकता है इसके अंदर जो थोड़ा डिफरेंट हो, ना कराओ. कुछ तो बड़े स्टैंडर्ड हैं जो स्ट्रेट अवे विजिबल थे. दिस इज ज्योमेट्रिकल इन नेचर. So tell me, if you have to explain to someone that you have to select from one group of identical items, if the selection is from identical items versus, so selection, I am telling you what the word selection. So selection from identical objects versus selection. Yesterday we discussed same thing for permutations. Selection from non-identical. Okay. So indistinguishable and non-identical objects. How does a selection different? What is the difference if we have to articulate the selection of identical and non-identical items? We discussed this also, not. How will you explain this to someone? There is a situation that the selection from identical objects versus selection. How will you articulate this to someone? If I show you a question, you will be able to answer. That I know. तुम्हें पता है क्या करना है. But is it in your head from थोड़ा सा मतलब theoretical perspective? नहीं. है?
नहीं है theoretical. बिल्कुल नहीं है. ओके, कोई एग्जांपल? एग्जाम्पल हाँ. एक क्वेश्चन दिखा दो. ओके, so if you are given five identical oranges हम्म, and you have to select two oranges, how many ways will you do this? क्या सर क्या? You have five oranges हाँ. and you have to select two oranges. So now the selection is being done from identical objects, अच्छा, right? 5C2. Yeah. So this is answer for identical or non-identical? अगर नॉन identical है आइडेंटिकल. तो सब एक ही हो गए ना फिर तो. एक नॉन आइडेंटिकल. But how many have you chosen? 2. Okay. So you've chosen two from them. All right. Got it. Okay. So let me just put the question to you. So you have books available to. अरे हमने question करा हुआ है by the way, but obviously we have not articulated to this length. बुक सिलेक्शन हमने करी थी, क्वेश्चन था उसके अंदर एनसीईआरटी में. सो यू हैव ओके सम 6 फिजिक्स बुक्स अवेलेबल. ओके, देन यू हैव 4 केमिस्ट्री बुक्स एंड देन यू हैव 3 मैथ्स बुक्स. This is what you have, and what you have to do is you have to select the book. Okay, the first manner in which you do the selection is this, which is selected in a way that uh, one book, at least one book of each subject is chosen. अच्छा, तो ठीक है. If the at least one number of ways of selecting one book, if same subject books are all different. Now there is a difference between each of the physics book. So physics 1 is different from physics 6. Chem 1 is different from Chem 4 and टोटल Chem कितनी बुक्स चूज करनी है? at least one. नहीं But नहीं, मतलब टोटल कितनी होनी चाहिए? at least one. कम से कम एक करनी है. But they're all, situation number 1 is they're all distinct, non-identical, are all different. मतलब ये आपस में they are all distinct. So they're like independent books, but आपको subject same ही रखना है. That is very important, that you keep the subject same. And at least एक चुननी है आपको. How will you select at least one book? 6 6C1 for physics Correct है? Agreed? plus Agreed है? 4C1 Yes? plus 3C1. Yes? Correct answer. Now I'll change the question bit. Now they're alike, okay? ये सारी किताबें सिलेक्शन ऑफ आइडेंटिकल क्वेश्चन आ गया. मतलब अभी हमने लिया था नॉन आइडेंटिकल है. अब 10 किताबों में से 6 फिजिक्स की आइडेंटिकल है, सारी केमिस्ट्री की आइडेंटिकल है और मैथ्स की भी आइडेंटिकल है. फर्क इतना आ गया क्वेश्चन में. सो ऑल दीज सेम, ऑल एनसीईआरटीज आर देयर. ये एनसीईआरटी केमिस्ट्री है,
ये तीनों मैथ्स की किताबें एनसीईआरटी की, मतलब सेट्स पढ़े हुए हैं। एक ही किताब के 6 सेट पढ़े, 4 सेट, सब्जेक्ट अलग है। आपको अभी भी एक ही किताब चुननी है, एक ही सब्जेक्ट की, लेकिन अब फर्क ही आ गया। नाउ वेन एवर यू सेलेक्ट एटलीस्ट वन बुक, योर जॉब इज नाउ टू इंश्योर दैट ऑल द बुक्स आर अलाइक। सब्जेक्ट अभी भी सेम है। देर अलाइक बाय द वे, ये तीनों सेम है। 6 की 6, सॉरी, ये 4 सेम है, ये तीनों सेम है। You have to select at least one book which is alike. लाइक मतलब? मतलब मैथ्स, फिजिक्स और फिजिक्स। अच्छा, तो ठीक है। 6C2। ओके, सी वाई प्लस, C2 बिकॉज अलाइक है। alike है। No, you're not, are you picking 2 books or 1 book? टू, टू बुक्स। No, are you making cases then? 2 books, 3 books, 4 books? हाँ जी। अच्छा, ओके, लिखो फिर, राइट इट। मे बी आई इंटरप्टेड यू। वो बुक्स अलाइक है ना? या, you have to find the number of ways of selecting at least one book if the subject books are alike. सिलेक्शन आपको अभी भी एटलीस्ट वन बुक की करनी है, बट अब इतना है कि वो जो 6 बुक्स हैं वो सेम है। बुक अभी भी एटलीस्ट वन बुक आपको करनी है। एक मिनट सर। बुक आर अलाइक। यस, बट नाउ दे आर आइडेंटिकल, सो हाउ मेनी वेज कैन यू डू दिस? यू आर गिवन 6 फिजिक्स बुक्स, इन हाउ मेनी वेज कितनी, कैन यू पुट मतलब देम? कितनी बुक्स अलाइक होनी चाहिए? 6 अलाइक हैं ऑलरेडी फिजिक्स की। अच्छा। यू हैव टू सिलेक्ट नाउ, डू सिलेक्शन of one item, at least one item. तो सर काफी सारे केसेस बन जाएंगे। अगर हम्म, फिजिक्स से 2 बुक सिलेक्ट है तो 6C2। हम्म, और केम और केमिस्ट्री से सिलेक्ट करी तो मैक्सिमम फिजिक्स से लाइक 6 बुक सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक बात है। तो जितने भी केसेस बने उनको ऐड कर देंगे, फिर उनसे लेके आ जाएगी। ठीक है, करो, ऐड करके बताओ कितना आता है। वो तो बहुत ज्यादा आ जाएगा। बहुत ज्यादा आ जाएगा। हाँ। ओके, ओके, ठीक है, सब में से अगर हम एक ही बुक सेट करें, सब में से दो दो, तीन तीन, चार चार, पांच पांच, राइट, जो भी है। ओके, दिस इज, गॉट इट। थोड़ा सा यू स्टिल हैव गैप इन योर, स्लाइटली।
वो बढ़िया आंसर दिया पहले वाला, when all the books were treated differently. It becomes very easy to do probability if this is strong fundamental. Committee, I think you can do. Okay, so do one thing. इसमें let's do it in a different manner so that it becomes slightly more clear. You just need to do. You don't need to solve this question. So read the question first, and we will try to. नजर आ रहा है? No, it's not readable. No, it's not. The bottom thing is yes. More exposure is I'm going to the next page now. Okay. ये लो ये. Okay, example. Read it carefully. You don't need to solve this. You just need to create the chart. ओ भाई साहब, क्या कमेटी है ये? ठीक है, ग्रुप है और क्या है? फिर बड़ी अलग लेवल अलग की कमेटी है प्रोफेशनल्स हैं, ना। अलग अलग ये चार्टर्ड प्रोफेशनल्स और अकाउंटेंट, कमेटी बन रही है. लाइक हाई क्वालिफाइड पीपल चाहिए। 7 मेंबर बनाने. जस्ट you can do it verbally also if you want to. This you can do easily, I think. एटलीस्ट, अरे ठीक है, एटलीस्ट 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ना। फिक्स कर रखा है. ठीक है, तो चार्ट बना लो पहले, पहले. नहीं रुक जा रुक जा दिखा लो ना, 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट, रुक जा इकोनॉमिस्ट फिर कितने ले रहे हो और कॉस्ट अकाउंटेंट कितने ले रहे हो. रुक जा। उससे आसान हो जाएगा, नहीं तो लिखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा. 6C3 इंटू 4 पेपर में 0 मार्क्स मिलेंगे, ये बता रहा हूं मैं. यू गेट 0 इफ यू राइट दिस, क्यों? बिकॉज यू आर नॉट, you're just answering it as a formula, whereas what you have to do is you have to write chartered accountant, cost accountant and economics. So case number 1, 3, 2, और इसमें से कितने लिए इकोनॉमिक्स के बंदे? 7 की बनानी है ना कमेटी. हम्म, So your 7 committee will be made up of how much? अच्छा तो ठीक है। 3, तो 2, 2. हाँ, Now इसके आगे write the what you're writing here इधर. Then case number 2. First write अच्छा अच्छा, all the ऐसे cases and करना then है, write. ठीक है। हाँ, of course, that is the way you do in paper ओके, यार. वो तो हम ठीक है ठीक ठीक है है। डायरेक्ट लगाना शुरू कर देते हैं.
बट यू अच्छा अंडरस्टूड अच्छा। राइट? हाँ हाँ। ज्यादा से ज्यादा यू नीड, अच्छा, 6 चार्टर्ड अकाउंटेंट तक हम जा सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ सारे केसेस। ठीक है, सो यू यू कैन राइट गो टिल, 2 2 1। एक बंदा तो चाहिए भाई हर हर ग्रुप से कम, हाँ। तो 6 चार्टर्ड अकाउंट तक नहीं जा सकते फोर हम। 4 1 2। हाँ। बस इतने ही। यस। नहीं, एक और भी है सॉरी। 5 1 1। ओके, ठीक है, इन सबको ऐड कर दे। फेयर इनफ। कितने बनाए? 1 2 3 4। बट वाई नॉट रिवर्स? कर दिया ना रिवर्स। 3 2 2, 4 2 1, 4 1 2, 5 1 1। ओके, 5 1 1। इनको रिवर्स। ओके, वेर इज 3 1 3? फिफ्थ। 3 1 वाई 3। नॉट दिस? वाई नॉट अच्छा दिस? तभी मैं बोल ओह। रहा था लिखो। अच्छा, थ्री एंड वन वाई थ्री नॉट 3 3 1? ओके। 3 3 1। दो केस मिस हो गए, जीरो, इसलिए चार्ट बनाना जरूरी था। अच्छा। ये लिखना ठीक नहीं है डायरेक्ट। नाउ इट इज वेरी इजी टू राइट ऑन द राइट हैंड फिर साइड एंड ऐड देन कर देंगे इन ऐड छह ऐड केसेस कर को। दो। सिंपल। काफी बड़ा आंसर आ जाएगा। हाँ मतलब, बट है बड़ा मतलब। लेट्स गो टू, okay, the one we were trying to do, identical and non-identical. I think that question now will make more sense in your mind because you may know how to solve it, but I think you don't have the articulation कैसे उसे हमें बोलना है। वो आइडेंटिकल वाली बात हम कर चुके हैं बहुत बार क्वेश्चन को। आई थिंक उसका नेम जो है, इस क्वेश्चन का नाम क्या होता है? ये कौन सा सिनेरियो है विद डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से सिलेक्शन हो रही है, आइडेंटिकल की या नॉन आइडेंटिकल की? ओके, all three are red, so selections are there identical, one of each color, non identical. All three are red. For A part, it would be 7C3.
Okay, all three are red. So identical hai. So identical balls are being chosen by you. Okay. None of the ball is red now. ठीक है, हटा दो. हाँ, पकड़ लिया. So so now you just going with white and blues, right? सही है. Going with white and yes. Why have you written this? What does this mean? ये क्या है? Okay, interesting. मतलब why can't you write this that I will select 3 balls out of 10? मतलब I have 6 white and 4 blue left. That's my total set, out of which I am going to select any 3. Why are you writing this 6C2 into 4C1? And then, okay, देखना इसका आंसर क्या था. What's your answer with this and this? So you're doing it one after another. First you're selecting 2 red, and then you're selecting 1 white. 3 चुन्नियां, क्या फर्क पड़ता है यार? Like you did this. All 3 are red. You're using multiplication theorem for this, and then addition.
नहीं, point is you have to select 3 out of 10 now. So why have you written this multiple is my question. What does it indicate? No, you are making 2 red, 1 ऐसे कर रहे हो? 2 white, 1 blue. And you picked up 3 and 3, okay? So what is the sum coming out to be of all of this? Long drawn. Your answer is 102, okay? 7 factorial गया 6 आ जाएगा. 60, 18, 20. तो मुझे समझ में नहीं आया. You made 2 1, right? 3 balls. You have to do just pick up any 3 balls out of the balance 10. Okay, 1 is of each color के लिए what will you do? Just take the total number of options into C1. सर 4C1 कितना होता है? 4 4 और 4 4 सी factorial थ्री by 3 factorial. हाँ, 4. पता तो है NCR is equal to NCR n minus R. हाँ ठीक. This is called as a complementary combination. NCR and NC n minus R. Both are equal. They're called as complementary combinations. ये क्वेश्चन भी एक आएगा. हाँ मैंने कोई कैलकुलेशन एरर कर दी थी. आ ओके, जाना था इससे भी आंसर. या क्योंकि दिख तो सेम ही रहा है. हाँ दोनों मेथड सही है. ये थोड़ा लेंथी था, ये थोड़ा सिंपल है. यस. फाइंड एक्स. सर वो एक बार रिजल्ट दिखा दो. कौन सा रिजल्ट? वो जो रिजल्ट्स आ रहे थे कॉम्बिनेशन वाले. किसके रिजल्ट? कॉम्बिनेशंस के जो कल दिखाए थे आपने. कॉम्बिनेशन? हाँ अच्छा, ओ थ्योरम्स यू मीन. ओके. हाँ हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, ये कॉम्बिनेशन थ्योरम वगैरह. ओके. हाँ. कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन. ओके. अच्छा वो, ओके, गॉट इट. समझ गया मैं. प्रॉपर्टीज यू मीन, राइट? ओके. दैट यू हैव टू नो. फिर हमने तो इस पे क्वेश्चन भी करा था.
Hmm. Please revise and do self study. Otherwise you will forget if you just depend on this. अब वॉल्यूम इतना हो जाएगा क्योंकि पूरा कोर्स आना है. होल कोर्स इज कमिंग. So how long will you avoid self studying? नंबर गिरते जाएंगे सिर्फ ब्रेन पे जाओगे तो. Repetition you have to do. Theory properties. Very useful. Hmm. ये टू कहाँ से आ गया? हाँ जी. ये टू कहाँ से आ गया? ये ट्वाइस है, डबल है. टू टाइम्स ऑफ द वैल्यू. प्रॉपर्टी कैसे लगेगी? इसमें टू भी आ गया अब तो। तो अलग अलग लिख दो इसको. दो दो बना लो. मेक इट टू. हाँ, ये भी स्प्लिट ठीक वन है। प्लस वन. आ गया। ओके, ये लेट्स देखो। सी. आ गया ना. हम्म। एक क्वेश्चन ये भी आता है जेई में भी और स्कूल के पेपर में भी आता है. ये थोड़ा सा टेढ़ा था. अच्छा. प्रूव दैट भी आ सकता है इसी की हेल्प से. प्रूव दैट.
if you have n different things, n different things, and you have to do combination of n different things in a way that you take some or all the things at one go. How many combinations will you make? Yes, sir. For example, if you have n different things, okay, you have, so question is, you have n different things, which is always the case. Okay? So let's say you have distinct objects n. You have to make combinations in such a way that you have to take at least one or maximum n things. Okay? So how many combinations will you make when you take some or all of them at a time? एक बार लिख दो जरा. Yes. Combinations of n things. How many combinations of n things are possible if we take some or maximum all n things at a time? कितने ग्रुप बना लोगे? भाई आपके पास 10 चीजें दे रखी हैं, आपको एक चीज ही उठाना भी अलाउड है और आपको NCN. 10 चीजें भी उठाना अलाउड है. NCN. व्हाट इज एलसीएम? NCN. होल्ड ऑन. व्हाट इट मींस इज, वेट करो, पेन क्यों नहीं काम कर रहा है? वेट, लेट मी, एक सेकेंड, कुछ हो गया है. Some accident. I can write with this, but I can't write with my pen. No, I'm just closing the board and opening it. All right, so let's look at the situation. You have 10 and you can pick one. So you pick one, then you pick two, then you pick three, and you can pick till 10C 10. तो ये कितना आ जाएगा आंसर? 10C1. So I'm saying sigma are things at given point of time. Sigma can be 1, R can be N, and NCR. So I can add all of them, and this is what I mean. Some or all, right? Till N tak allowed ho gaya na. If you open this, what will happen? NC1 plus NC2 plus NC3 से लेके NCN, which you were saying, right? वो तो picking all सारे इकट्ठे तो लोगे तो ये हो जाएगा ना NCN, which is what you said. I said some till all, maximum तो all ही उठा सकते हैं. At least one हो गया ना basically. At least one से लेके यहां तक उठाना allowed है. If you calculate all of this, अगर आप इसे calculate करोगे, what, you know how much it comes out to be? So let's say you have, NC10. no, hold on. So you have 3. So let's pick up 3C1 plus 3C2 plus 3C3. देखो कितना आया ये 3, ये कितना आया 3, और ये कितना आएगा 3. 3 कैसे आ गया? 1. अच्छा तो अच्छा ठीक है. ओके. कितना आ रहा है ये 1. टोटल? Sorry, 6.
ये तो गया ना, 7, 7 आया ना, ये 1 है. Okay, now let's pick up 4C1 plus 4C2 plus 4C3 plus 4C4. ये कितना आया? 4 प्लस कितना आएगा ये? 6, ये 4, ये 1, कितना आया? लेट्स पिक अप 5. 5 कितना आएगा ये? 10, 10, 5, 1, ये कितना हो गया? Do you see 7, 15, 31? Actually, this is 2 cube minus 1. This is 2, 4 minus 1. And this is 2, 5 minus 1. So if you have 10 n number of objects, and the question is you can pick from 1 to n, how many groups will be formed? So you will say NC1 is the first, NC2, and I'm going to add all of them. Your answer is going to be 2 raised to power n minus 1. So the result is for you is, if you're given that question where you get something like this, r is equal to 1 to r is equal to n, then this result is NCR for this is 2 raised to power n minus 1. Direct you can write. Which you were saying is NCN. मुझे लगा you knew the result, but it's not NCN. It is 2 raised to power n minus 1. ठीक. You can do one after another. You can pick. Okay. Okay. Now tell me, what will you do for this? You are again taking some or all, but condition एक लगा दिया कि identical है उसमें n1 और n2 फिर n3, third kind, etc., etc. You're again picking 1, 2, 3, 4, 5, but now you have identical items also. So what is the result for this? वही क्वेश्चन हो गया ना, सेम जो हम कर रहे थे बुक्स वाला, जिसमें ऑल द बुक्स वर अलाइक. यू हैड 6 फिजिक्स बुक्स. उनको यू सबको हैड, ऐड कर देंगे. क्या ऐड कर दोगे? Oh. होल्ड ऑन, ऑल्दो इसका जो होता है आंसर, सो इफ यू हैव n ऑब्जेक्ट्स, सो व्हाट यू डू इज यू हैव आंसर विल बी जो भी आइडेंटिकल आ रहे हैं ना, जैसे 6 फिजिक्स बुक्स आइडेंटिकल थी, तो ये n1 हो गया. और क्या था? 4 केमिस्ट्री बुक्स थी, आइडेंटिकल हो गई थी, n2 हो गया था. और 3 मैथ्स बुक्स थी इफ यू रिमेंबर, तो ये n3 हो गया मान लो, ये दिया हुआ है. नाउ द क्वेश्चन इज, इन हाउ मेनी ways you can select at least one book? If you remember, I said this. At least one book का मतलब है कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा. ओके, लेकिन उसमें थी if the subject, जो सेकेंड पार्ट था, बुक्स आर अलाइक. ये कॉम्बिनेशन निकालने के लिए द मेथड इज n1 plus n into n2 plus 1 into n3 plus 1 डैश डैश डैश, जितने भी दिए हुए हैं क्या काइंड्स, n काइंड दिए तो nn तक माइनस 1. तो इसका आंसर आता है हमारा 7 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 minus 1. So if there is a combination and you can pick one or more, you're allowed to pick, then you don't do NCR जो भी हमने पीछे करा था, क्योंकि इसमें आइडेंटिकल आइटम्स आ गए. तो 2 raised to power n की जगह द रूल इज दिस. ठीक.
But if they're different, you did it correctly. 6c1 plus 4c1 plus 3c1. This is correct. ये सही करा था बिल्कुल. But if they're identical, then the rule is this: n1 plus n2 plus n3 plus 1. Okay. So if you have to do permutation of a permutation, okay, and you're doing permutation, but the thing can be repeated once, twice, up to r times in an arrangement, then how do you do this? Repetition is allowed, but they can be repeated r times allowed है. So, किसी भी अरेंजमेंट में you can have each thing being repeated r times allowed है. आप कर रहे हो permutation of n things. You're doing permutation of n things and you're taking r at a time out of them. तो आपको 20 चीजें दी हैं, उनमें से 8 को आप अरेंज कर रहे हो, और ये लिखा हुआ है कि जो 8 चीजें हैं, जो सारी की सारी हैं, ये रिपीट हो सकती हैं उन 8 जगहों पे. 20 आइटम है आपके पास, जिनमें से आपको 8 स्पेसेस भरने हैं, और उन 8 स्पेसेस में रेपिटेशन अलाउड है. ठीक. You if I tell you the question, you will do it in one line. That I can assure you. अरे भाई, you have अच्छा. ओके. n items, गुरुजी. हाँ ठीक है ठीक है, मैं अभी लिख देता हूँ, वही थ्योरम ही लिख देता हूँ. अगर लाइक रिपीटेड वंस है तो उसको 1 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे. No, you did not understand. एनपीआर. You have to pick, you're given n things, you have to fill up r places. अच्छा. Repetition of the thing is allowed at all the r places. तो I give you अगर 10 एन आप लिखो numbers. तो एन इंटू एन रिस्टोर पावर एन. R ना, क्योंकि r जगह भरनी है भाई. हाँ मतलब ठीक है, एन रिस्टोर पावर आर. n raised to power r. हाँ. What you said right now, okay, उसकी जो articulation है वो ये है. Let me share that with you so that you're clear in your head कि कौन सी articulation कहाँ पे use होती है. Okay. Let me show you that articulation. वो ठीक है, तुम क्वेश्चन कर लेते हो, but I think as it gets bit tricky, it is more important that these. So let's say this is your case. This is what you meant earlier. Permutation when some of the things are alike, but they are taken all at a time. ऊपर वाले केस के अंदर, if you read the language, let me just put it right in front of it so that the language is clear in your mind कि दोनों अलग अलग क्यों हैं, situation wise.
ये रहा. So this is what we discussed earlier. N raised to power r. So permutation, when each thing may be repeated. The number of permutation of n things taken are at a time. इस क्वेश्चन में taken all at a time. And some of the things are alike. So they're two different scenarios. ठीक है. Question में you will be able to do. Okay. But language wise, when each thing may be repeated once, twice, then it is n raised to power r because you're filling r places in an arrangement. सही है? ठीक है. ठीक है. I'm going to send you a PDF. Please revise that PDF. Very detailed manner. It will help you. क्योंकि वो you actually if you start preparing, it will take a few days yourself to get a grip on this. खुद को करने में भी टाइम लग जाएगा. ठीक है. So let's start tomorrow with physics. कल सुबह कर ले. सुबह क्यों? कल क्या है? कल छुट्टी है. अच्छा, मेरी क्लास होगी यार. मेरी क्लास होगी 10 to 11:40. Then I will have a yoga class till 1:40. ठीक. सेम टाइम ही रखते हैं.